get up, don't lie on your bed. That is the biggest message I want to give to everybody. कि boss अपना don't lie on your bed. Just the moment you feel better, again I'm repeating, leave your bed. Sit with your family members, spend time with yourself. You like reading, you read. You like talking to your friend, invite them. Welcome to Stories of Courage, a podcast series by Max Healthcare. Along with expert medical care, a patient's courage and resilient spirit play a critical role in overcoming a difficult disease. आइए इस पॉडकास्ट में सुने कुछ ऐसी ही courage की stories. Hello friends, welcome to another episode of podcast by Max Healthcare about stories of courage. In this podcast, we always talk about the patients who overcome the critical illnesses. I am Dr. Surender Dabas. So, आज हमारे साथ हैं दीपक, जिन्होंने पेनक्रियाज के कैंसर को मात दी. And I would like to introduce Deepak, and he will introduce himself. Hello everyone. This is for all the audience watching this podcast right now from wherever in the world. My name is Deepak Dureja. I am 39 years old. I belong to Delhi, and I am a real estate and investment professional. And also, as my hobbies, as Sir has just mentioned, I do cycling, I play cricket, I do running, and I love to spend time with my family and my kids. And as far as knowing about this particular disease is concerned, I had I had some fever, then stomach ache. एक बार हुआ, took some dolo, and ठीक हो गया. Then in subsequent week it happened again. Then I got a little worried. I got a lot of chills, again stomach ache, fever. I again took dolo, and I thought, okay, before going to the doctor, let me get myself scanned completely. So I underwent a complete scan, and there is where I found out that there is some reports were not good, some were good, some were not good. LFT में थोड़ा सा था. Then there was something in ultrasound which came. Then I took my reports to the specialist. I did not go to general physician again. I took it to specialist के gastrointestinal के sir ये check कीजिए और बताइए what is it. So then he said, this looks like a stone. We need to study more. And then he did some more studies, and then we did more ultrasound, and there is where we found out that there was some kind of development which was happening under my bile duct. So there's something called bile duct near my liver, which I know now. Itna sara medical terminologies, of course, we get to know while we go through this journey and process. And then more tests. Then he did CT, and then we found out that there was something called Periampullary Carcinoma, which is related to pancreas and near to liver and near to intestine. There's a organ called ampulla. Yes. So so this is how we found out, sir. So जैसे दीपक आपको पता लगा, मतलब एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा, फाइन. एंड जैसे मैं बोल रहा था कि भी रेयर एट योर एज, यू आर 39 ईयर ओल्ड ओनली, एंड डायग्नोज होता है. तो डायग्नोज होने के बाद, एंड यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री, लाइक योर फादर वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एंड उनका शायद अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, एंड 3-4 मंथ्स के गैप पे आपको कैंसर पता लगता है. तो एक फैमिली में जो माहौल होता है, मतलब अब मैं उसको दुख का माहौल बोलूँगा, येस आई एम राइट, बट एक होता है कंसर्न कि वाई इज हैपनिंग इन माई फैमिली, वाई. तो वो उस टाइम फैमिली में जो माहौल था, उस टाइम आपको एक मोटिवेशनल या एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए. तो उस टाइम वो माहौल कैसा था, मुझे वो आपसे जानना जरूरी है. Very sad. I lost my father, just few months back, and he fought for a year and a half around, and then this got diagnosed. अब पता नहीं क्यों, बट हमारे पास ना वाई मी सोचने का टाइम ही नहीं आया, एक्चुअली स्पीकिंग, कि वाई मी, उसमें हमने टाइम वेस्ट करना शायद प्रेफर नहीं किया. इम्पॉर्टेंट था कि एक सिचुएशन आई है, एंड सो वी टेक लाइफ एज अ वीडियो गेम, कि एक लेवल क्रॉस कर लिया, अब एक और लेवल आ गया है, फटाफट इसको भी जीतते हैं मैक्सिमम नंबर लेके, देन गो टू द नेक्स्ट लेवल. एंड एक्चुअली, एंड यस, फैमिली का बहुत 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 बड़ा सपोर्ट रहता है. आपके जो क्लोज्ड वंस होते हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है.
एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई एडिशनल मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हैं या मोटिवेशनल गुरुज को सुना है, बट समहाउ गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. एक पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में दिया हुआ है. एंड वाई मी पे टाइम स्पेंड किया ही नहीं, उसी समय से सर्च करना शुरू कर दिया कि अब करना क्या है आगे. क्योंकि बीइंग एन मेडिकल प्रोफेशनल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी स्टोरीज में जानता हूँ कि जैसे किसी पेशेंट को वी आर डायग्नोज विद कैंसर, तो हमारे पास मिक्स थॉट्स हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यार दोस्त साथ छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ सपोर्ट बढ़ जाता है. तो एक फैमिली सपोर्ट, एक फ्रेंड्स का सपोर्ट आई विल से इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. सो आपके साथ ऐसा कैसा रहा कि भी लोग कैंसर की बीमारी को ऐसे मानते हैं कि इट्स स्प्रेड बाय टच ऑल्सो, एंड इफ यू आर कनेक्टेड टू हिम यू विल लूज समथिंग. तो ऐसा कुछ आपको फील किया इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान या जब आपको डायग्नोज हुआ? सो मुझे लगता है मैं सेकंड कैटेगरी में फॉल किया. अगेन गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ एंड आई एम सराउंडेड बाय सच ब्यूटीफुल सोल एंड पीपल जिनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. एंड जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया. मतलब ज़रा सा किसी को पता भी चला तो कॉल किया उन्होंने, जितनों से हो सका मिलने आए, स्पेशली मिलने आए, 2 बार 3 बार 10 बार मिलने आए. एंड काफ़ी चाय बनती थी दिन भर. So and it is nice. So फैक्ट बता दूँ आपको कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, इट इज़ नीडेड ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट ऑफ दिस कैंसर. सो लाइक you know your surgery will be done, you know your chemotherapy will be done, there are so many things going in mind. पर उस टाइम अगर आपके साथ कोई खड़ा है, फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, तो आई थिंक 50% ऑफ योर स्ट्रेस इज ओवर. And rest you have to tolerate because you are young, physically active, then you can take care of everything. But if you're not mentally stable, you're not strong mentally, और आपके पास support नहीं है, that is very difficult to come out of this journey. So being a young guy, being a cyclist, आपको जब ये बीमारी डायग्नोज होती है तो आपको कभी लगा कि मैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट कराऊंगा, इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होना है, सर्जरी बड़ी है, मैं कैसे बाहर आऊँगा इससे? अगर मेरे को बाई चांस कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है तो how I'm going to handle this, what will happen to my family because you lost your father, you have a young wife now and you have a small kid. You have one kid? I've got 2 kids. Yeah, 2 kids, okay. My so daughter there's so many thoughts. मतलब अगर मैं सोचता भी हूँ, बीइंग अ डॉक्टर मैं नहीं सोच पाता इतना, पर मे भी फैमिली है, हम भी सोचते हैं ये चीज़ें. बट जब ये बीमारी डायग्नोज होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत सारा कुछ सोच जाते हो. देखिए 100% थॉट्स आते हैं. मैं बोलूँ कि नहीं आते हैं या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. यू गेट थॉट्स एंड एट टाइम्स दे आर नॉट पॉजिटिव ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉजिटिव सिचुएशन टू बी इन. नो वन इन द वर्ल्ड वुड वांट टू हैव गेट इनटू दिस सिचुएशन के जहाँ पर ये करे. बट हाँ, थॉट्स डेफिनेटली आते हैं. हर तरह के थॉट्स आते हैं. थॉट्स रिलेटेड टू के हाउ पेनफुल द जर्नी इज गोइंग टू बी, थॉट्स रिलेटेड टू फिनेंशियली क्या होगा, थॉट्स रिलेटेड टू के अब कैसे करना है आगे, कि क्या हाउ इज इट गोइंग टू बी. बट कई बार कहते हैं ना कि जब कुछ समझ नहीं आता तो छोड़ देना चाहिए, एंड जस्ट गो विद द फ्लो. यस, वी शुड गो विद द फ्लो. एट टाइम्स जब आपके हाथ ही में कुछ नहीं है, आप नो वन has put it inside you, no one has injected it inside you, it has happened. So if it has happened automatically, it will get cured automatically. वाली बात है. Have faith, this is what you can do. So I can tell you one thing, because I was seeing you very closely and I was seeing your family also. So I always say the one person when you're married which stands besides you is your wife, and she should be very very emotionally strong. Yes. But if she is emotionally labile, then it all get transferred into you. So अगर वाइफ सपोर्ट नहीं करती है या वाइफ पॉजिटिव नहीं होती है तो बड़ा मुश्किल है इस जर्नी को क्रॉस करना. 100%. And I think same was with you, which I can feel. मुझे लगता है कि आपके जो आसपास लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस सब एक होना चाहिए. ओके, एंड इट हैज़ टू बी क्लियर. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बिकॉज if I'm talking to you and if I have a doubt, if I see doubt in you, suppose, if I'm looking at you, you are doubtful about something, so I get a doubt, yaar pata nahi kya hai. So again, as I said, yes, my life partner has always had a very positive approach. Obviously thode hile the, everyone got shaken up, but then everybody stood up and everybody had a positive thought. हम घर में ये बात ही नहीं करते. हम घर में genuinely बता रहा हूँ मैं आपको, we keep it very light. We play, we eat, we enjoy.
That I felt during your treatment also. So जब आपको ये बीमारी डायग्नोज होती है, so आज एक दूसरा डॉक्टर भी है जिसको हम कहते हैं गूगल डॉक्टर. And I say 99% of people, just when they are diagnosed, they always go on Google. कि what is this cancer? What are the survival chances? What are the complications? What are the treatment? And there's so many things. So even you are in that 99% who will Google that because you're an educated guy and everybody want to find out something from Google. As a doctor, we don't like Google doctor, but people always come to us after Googling so many things. So what was your experience when you were searching on Google about the symptoms? आपको क्या feel हो रहा था जब आप ये सारा कुछ search कर रहे थे? I tell you, so I met a lot of doctors. The moment I got diagnosed, thankfully I have some friends, some of my classmates, they are doctors, and I traveled, at various other states and cities, to meet doctors, to take the expert opinion, or rather to understand who can do this surgery the very best. Because मुझे एक चीज़ समझ आई इस दौरान कि this is not going to be an easy affair. It is difficult surgery basically. It is not going to be an easy affair. मतलब it is not कि चलो कुछ आया है और ठीक कर देंगे फटाफट सर्जरी होगा और हो जाएगा, because there are multiple organs involved inside our body, and that particular gentleman called Ampulla stays at a very remote location inside our body, और वहाँ तक जाने के लिए you have to cross many other organs, and so you need a neat hand for that. You need a very neat hand, someone like Sachin Tendulkar, who can just play the ball between the two players. So expertism, is something which was needed. So I met various doctors. I went till various other cities in South India also. Because यहाँ मैंने देखा कि doctors were doing open surgery for this, in the sense कि वो पूरा ऐसा कट कर देंगे आपका stomach. And this is how it is done. USA में now the tradition has changed, and the technology they have adopted is of robotics. तो यहाँ पर इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है. 90% they do not still do. So hardly 10% are doing either laparoscopic or robotic. So after I read it all, after I met all the doctors and my friends, मुझे समझ आया कि अगर कोई किसी तरीके से भी इसका रोबोटिक हो जाता है, सो दैट इज गोइंग टू बी एन ईजी रिकवरी फॉर मी. सर्जरीज दोनों सेम है, बट रोबोटिक में मेरी शायद रिकवरी बेटर हो जाएगी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इम्प्रूव्ड रहेगा उसका. सो दिस इज व्हाट आई मेजरली फोकस्ड ऑन, फाइंडिंग अ राइट डॉक्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मेरे को एक ठीक जगह मिल जाए कि जहाँ पर दिस कैन बी डन इफ पॉसिबल रोबोटिक. So when I ever see a patient with periampullary carcinoma, मैं उनको एक statement देता हूँ. Your cancer is not difficult to treat, but my surgery is difficult. Your cancer has good survival, but my surgery has complications. So now I always say either you go for open surgery, laparoscopic or robotic surgery. It has its own complications. Like open में आप कट दे के कर रहे हो, या laparoscopic में नहीं दे रहे हो, robotic में भी नहीं दे रहे हो. बट इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है कि आपको कुछ ऑर्गन्स काटने हैं, वापस जोड़ने हैं, विशेष एनास्मोसिस. तो वो जो एनास्मोसिस है वो हमारे लिए भी नाइटमेयर है कि उनमें से कोई भी एनास्मोसिस लीक नहीं होना चाहिए. सी एनी टेक्नोलॉजी विच हेल्प अस इन मेकिंग दिस एनास्मोसिस बेटर विल मेक योर सर्जरी ईजियर एंड योर कॉम्प्लिकेशन विल बी लेस, योर रिकवरी विल बी फास्ट. सो इन रोबोटिक सर्जरी इट्स अ 3-dimensional surgery. So we see bigger, like 10 times bigger. So it always, and the instruments, they have a good motion. So it's easier to make the anastomosis. So if your anastomosis are good, there is no leakage. Leak नहीं होगा तो आपकी survival better है, recovery better है. So if I'm an open surgeon, I should recommend people open surgery. If I'm a laparoscopic surgeon, I should recommend laparoscopic. If I'm robotic, I should recommend robotic. So we should know the best technology. Yes. And like, I cannot do robotic surgery for every patient who is coming with pancreatic cancer. Yes. You should know where it will be the best suited. So any doctor which tells you the right way of doing your surgery is best. So cancer curable hai, surgery complicated hai. We tell everything to the patient very honestly, but उसको बताने से पहले हम patient को भी read करते हैं कि ये patient जानना क्या चाहता है. तो या तो आप फैमिली मेम्बर को बताओगे या आप पेशेंट को बताओगे.
सो आई ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू बट यू आर एडमेंट कि मुझे सब कुछ बताओ क्या क्या होना है. देन वी गेट वेरी कॉन्फिडेंट कि भी हाँ ये सब कुछ जानना चाहता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग. सो लाइक इन फीमेल, व्हेन ए फीमेल कम्स इज इमोशनली लेबाइल, अब उनको सारी सच्चाई बताते हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है. बट जब पेशेंट हमारे पास कॉन्फिडेंट आता है तो वी आर वेरी हैप्पी कि भी हाँ इनको सब कुछ जानना है. एंड उसका बेनिफिट क्या है, अगर मान लो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि भी ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बट वी कैन हैंडल दिस. सो आपको पता हाँ ये हुआ है, ये ठीक हो जाएगा, पर मैं आपको नहीं बताऊं और समथिंग रॉन्ग हैपन्स इन आईसीयू, फिर आप कहोगे यार मुझे तो ये क्यों हुआ, तो आप इमोशनली डाउन हो जाते हो. तो टेलिंग द पेशेंट ऑल द ट्रूथ इज मस्ट फॉर एवरी डॉक्टर इफ द पेशेंट वांट टू लिसन. अब एक सवाल आता है कि भी आज दीपक की सर्जरी है, दीपक को ओटी जाना है और पूरी फैमिली है, फैमिली में पीछे सारे लोग हैं, तो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बट देयर इज एक्सपीरियंस कि आई एम गोइंग टू द ऑपरेशन थिएटर. तो लोगों के दिमाग में होता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, मेरे साथ क्या होगा. सो एक वो क्या थॉट प्रोसेस थी कि भी ओके. सो मैंने जैसा बताया कि आई ट्रैवल्ड एट वेरियस प्लेसेस, यूएसए तक से कंसल्टेशन लिया, समझा चीज़ें क्या होती हैं, तो समझ आया कि देयर इज़ अ डेफिनेट चांस कि 10% का रिस्क रहता है, जो कि डॉक्टर्स सीधा नहीं बताते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से घुमा के चीज़ें. और कई बार तो नहीं सर, क्या कह रहे थे आप, दोबारा बताइए. They try to convince you कि सर्जरी तो करनी है, हाँ, but I cannot guarantee you. हाँ, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग, हर डॉक्टर का अपना एक तरीका होता है वो 10% को प्ले अराउंड करने का. कि इट्स लाइक सम मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था तो उसमें जो चीज़ उसने नहीं बोलनी थी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, वो बोलते बोलते ऐसे बात करते so something like that, so there's a very interesting way, every doctor carries, बट समझ आया जब स्टडी किया इसके बारे में कि यस देयर इज अ रिस्क. तो व्हाइल आई वाज गोइंग टू द ओटी, तो मैं सच बताऊं तो अगेन एक पर्सनल सपोर्ट मेरे पास आपकी टीम से था, आपसे था, आपकी टीम से था. और कुछ डॉक्टर ने मेरे को, व्हाइल आई वाज ओटी के टेबल पे था, जब मैं मतलब जब व्हाइल सिडेशन एनेस्थीसिया सो कॉल्ड, तो उस समय कॉल आया कि एनेस्थीसिया दे दिया, नहीं दिया, किसी दूसरे डॉक्टर के पास. आई वाज तो ऑब्वियसली नॉट कैरिंग माय फोन देयर. तो वो कह रहे डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं. भाई सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, मैंने देख लिया है, सब बढ़िया है. तो अब ऐसी थॉट के साथ आप टेबल पे लेट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर. then in your subconscious mind you are कि यार चल ठीक होगा सब. So basically this is the team work basically. I always say you should have good doctors with you, you should have good anesthesia people with you, good nurses, good technicians. Yes. In any surgery, is a pancreatic surgery or any surgery. I remember this lady doctor, I don't remember her name, but while she was giving me something on my back here, and a spinal epidural while she was giving, so she said you are very strong Deepak. अब वो आया थॉट तो यार आई एम वेरी स्ट्रांग, मेरी मसल्स विल बी स्ट्रॉन्गर, मैं महान हूँ, आप समझ रहे हैं वही आमी ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मुझे तो क्या होगा. सो तो व्हेन यू गेट पॉजिटिव थॉट्स, यू गेट पॉजिटिव वाइब्स, तो अपना ऊपर से नीचे तक सब ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव, यहाँ से लेकर नीचे तक. सो तो आई देयर इज अ डर which you get while you are, obviously एक डॉक्टर सुई लगाने लगता है उसमें डर लगता है, you are तो going on operation table, तो obviously there is some kind of डर inside, but yes if it is handled well, I'm not saying कि डर नहीं है, डर है, डर के आगे जीत है, but if it is handled well तो वो डर आपका बहुत कम हो जाता है, वो डर आपका पीछे चला जाता है. बेसिकली मैं इसको कहता हूँ पर्सनल टच. हाँ, फाइन, which is very important. एक होता है कि मेडिकल टच, कि आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ पेशेंट, फाइन. Some way it should not be there. It should be a personal touch. Hi Deepak, how are you? आप सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, कुछ नहीं होगा, don't worry. Next step, your anesthesia people are meeting you. Deepak, everything is fine, you are good, कुछ नहीं होने वाला. I am saying I don't remember her name also. I don't know who was she. बस उतना ही मैंने तो, she was giving injection on my back. I don't know her face also. Think about it. But I remember what she said. The words matter. Words matters. So now सर्जरी हुई, सर्जरी खत्म हुई, ICU में आए. एंड आई विल से कि भी आपने इस सर्जरी को कोप अप किया, यू रिकवर्ड वेरी वेल एंड देन यू वेंट होम. उस रिकवरी के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, बीइंग ऑन ए प्रोफेशनल लेवल, लाइक यू आर डूइंग साइकिलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम,
you're running for a long time, and even your work-wise. So what are the differences? It's surgery and you are again on chemotherapy. How is changing your life? देखिए obviously I could not exert as I could before surgery. और जैसा कि मैंने डॉक्टर से समझा कि सो आई आस्क्ड डॉक्टर वाइल जैसे सर्जरी हो के ICU से मैं शिफ्ट हुआ इनटू द रूम, तो एक डॉक्टर साहब आए, मैं कहा डॉक्टर मैं क्रिकेट कब खेल पाऊंगा? यार रुक जा थोड़े दिन यार. So first day you're asking them कि when I will play cricket. हाँ, the first day I'm asking डॉक्टर साहब मेरा मैच है अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, So these are all positive things I'm telling you कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे खेलना है. Oh yes. And it's all vibes going from your brain. Yes. कि हाँ मुझे रिकवर करना है और मुझे खेलना है. Yes. I got discharged in a week's time. Yeah, it was around 7-8 days you got discharged. So and it was on my birthday. Yeah, I remember very well. So I remember you came to see me, तो you said तेरा तो बर्थडे आज. मैंने कहा हाँ जी. तो नहाया क्या? मैंने कहा नहीं. मैं कहा ये सारे पाइप्स लगे हुए हैं, ये स्टिचेस हुए हैं. तो you said go and take bath first. That's a big thing. I mean मेरे को कितना 1 हफ्ता हुआ था सर्जरी हुए, and then you said के okay you go home today. And it all makes basically good vibes into you. Yes. Yeah, कि I'm recovering well. He's saying us कि discharge हो जाओ. हाँ, and then your whole team celebrated my birthday there. Yeah. That's a big thing. What else So you that's want? something personal does. Basically, see, this is a disease. Everybody is worried about this. And if you're putting some good thoughts about it, good vibes, then your recovery makes a difference. मुझे लगता है कि मैं सच बताऊं आपको तो I think I never took this as serious it is. जब उसने And we should never take it. मतलब मेरे से कोई बात, somebody was talking to me the other day कि यार आप ऐसे क्यों करते हो, you should take a little rest or I said जब उसने मुझे serious नहीं लिया मैं उसको serious क्यों लूं? Right. So it's like all like positive thoughts. It's like give and take. So coming back to what you asked कि उसके I think I went home, and after around 2 weeks after I reached home I started cycling slowly, but yes I started cycling, and uske around again after 2 weeks I started playing cricket. And I think you were the man of the match in that cricket match. हाँ, maximum sixes का award मिला. And it was a very emotional, that was one emotional feeling I tell you, कि जहाँ पर I was told के 6 महीने तो आप रेस्ट करोगे सिर्फ. So these are benefits of, we say benefits of minimal invasive surgery, means where you're not putting cuts. Yes. So in pancreatic surgery, if I'm planning an open surgery, we have a big cut. So you can't run. At least for 3 months, we say. You can't exert for 3 months. But now you're doing pinhole surgery. So you can do your activity maybe after 1 week or 2 weeks. So that's why you're playing cricket after 4 weeks and you're getting man of the match. That is good. And again, it is bringing positive things into you. So this is how your journey is. And now you are getting chemotherapy, and after 6 hours of chemotherapy, you do a scan and your scan came normal. तो जब वो स्कैन आप कराने जाते हो तो एक डर होता है कि यार स्कैन कराने जा रहा हूँ, स्कैन में क्या आएगा. एंग्जाइटी होती है. एंड व्हेन द रिपोर्ट केम, मैंने तो देखी ही नहीं रिपोर्ट आई, एंड आई वाज लाइक माय सिस्टर वाज सिटिंग. मैंने फैमिली ग्रुप में डाला, हमारा जो 3-4 लोगों का फैमिली ग्रुप है. मैं कहा देख लो यार आप लोग. तो विदाउट सीइंग यू जस्ट सेंड इट टू एवरीवन. हाँ, मतलब हल्का सा देखा, ठीक लग रहा था. देयर वाज नथिंग इन बोल्ड. सो आई वाज लाइक दिस इज लुकिंग ओके, बट स्टिल नथिंग बोल्ड ब्लैक. हाँ, द बोल्ड ब्लैक वाज नॉट देयर मच. एंड सो मैं कहा यार आप लोग देख लो, पढ़ के बता देना. And God grace, it came normal and you are absolutely doing fine. So Deepak, your motivation for so many people who are suffering from this cancer or any type of cancer. So I will ask you, seeing your story, a family member, your father suffering from cancer, then you got a cancer, and it's a big pancreatic cancer, we got treated. So I want you send some messages to our audience. Either they are suffering from cancer, they're not suffering from cancer. How you can avoid cancer? You can't avoid that. But if you get this disease, what are your thoughts? You want to give a message to our audience? I think the message is very simple. See, it is your life. You have to live it. And how you react to anything is your choice. आप उसको ज़्यादा सीरियस ले लेंगे, या फिर आप उसको
you start getting worried, then it is your choice. Eventually, whatever message you give to your mind will give the same message to your body. बस ये एक बनी हुई ये this is the fact thing. Then challenges आएंगे, सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो या कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा ट्रीटमेंट हो. It is not easy. If I'm not saying it is easy. It is not at all easy. It is very difficult. While I'm speaking to you right now, I am still under side effects. Yeah, you are. My feet is paining. Okay, my whole mouth is sore. I'm losing my hair. And it's all side effects of chemotherapy. Dizziness. I still have a dizziness. Yeah, I think you 10 days before you got a chemo. Yes, my next session is due on the coming Monday. That's right. So it's all positive thoughts. You're sitting here. So again, the moment you feel fine, get up. Don't lie on your bed. That is the biggest message I want to give to everybody. कि boss, don't lie on your bed. Just the moment you feel better. Again, I'm repeating. Leave your bed. Sit with your family members. Spend time with yourself. You like reading, you read. You like talking to your friend. Invite them. मैं खुद को invite कर लेता हूँ सर लोगों के यहाँ पे. I do self invite. Trust me. I call my friends. I'm like, I'm coming. हाँ I'm coming. क्या खिलाएगा बता. Let's have coffee. Yeah. I do self invite. I call my relatives. I go to them. तो my wife often asks me क्या कर रही है. मैं self invite कर रहा हूँ खुद को. I like it. So do whatever. But उस thought से निकलो. Divert yourself. दूसरे डाइवर्ट करने आएंगे, आपको लगेगा यार, see everyone is smart these days. Anyone else, any person, be it your own mother, father, wife, वो कुछ और बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगा यार ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. But when you distract yourself, then your mind will not understand that. Then he'll just follow you because you are giving an order कि भाई ये नहीं करना है, ये करना है. So till you cannot make yourself happy, others. You are the master of your mind, and your mind is the master of your body. So you give message to your mind, your mind will give message to your body, and accordingly things will start happening with you. That's the only message I can give to anybody. So ये तो दीपक का मैसेज कि भी don't make excuses or don't make others to make you an excuse. So मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे साथ क्यों हुआ, ये सारे थॉट साइड में हैं. We say anybody can have any disease, but you have to fight with this. And for this, the best part is you should go for checkup of your body before the symptom starts. So you always say that no age is debarred from getting cancer. So you should get your health checkup annually, at least when you are 30 plus. And don't take your symptoms lightly. If you are getting some symptoms, they are not getting cured, see a specialist. So this word is specialist. Because nowadays we have specialists in every field. It may be cancer, it may be some liver, it may be some endocrine, or maybe orthopedics. So you should always consult an specialist for your symptoms. And please trust your doctors, get your treatment at time. And one more thing, because treatment is not cheaper right now or nowadays, insurance is one thing which everybody should have. So this is my message. If you want to take a right treatment, you want to go to the right place, you should have at least good amount of health insurance. And don't take any symptoms lightly. Consult a good specialist. Thank you so much. Thank you, audience.